अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सायरा इकबाल ख़ान। और आपको पता ही है कि हमारी वॉबल हार्ट सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम छुपे हुए हीरों को ढूंढ के लाते हैं। और ऐसे लोग जो जनरली they play humble in their profile, but they are actually the hidden giants, I must say, in terms of their caliber, in terms of their persona, in terms of their contributions to the society at large. और आज हमारे पास एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं who is basically Mr. Farrukh Raza from the HR Information Systems domain at Forland, a very big and huge name in Pakistani's industry. और Farrukh, कैसे हैं आप? जी सायरा, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रो। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल। आप कैसी हैं? ठीक। आई एम गुड। तो बजाय कि मैं आपका इंट्रोडक्शन दूँ, सो आप बताएं लोगों को कि what is something they should really know about you? So first of all, thank you very much, Saira, for having me here. And I think I'll consider this opportunity as an honor. आपने बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ मुझे हीरो और भी बहुत सारी चीज़ें कह के वो कह दिया। I'm just a normal person. I have been part of the HR and information systems fraternity for almost about 15 odd years. I have experiences in different companies, including construction, currently the automotive side, before that banking, then IT, and so on and so forth in different parts of the world. And for the past 5 odd years, I've been settled here in Pakistan and working in Forland, which happens to be a trucks manufacturing and assembly line division here. All right. तो बजाय कि मैं आपसे अभी ये पूछूं कि how do you see the emerging scenario, we have been into the discussions of the emerging landscape in terms of volatile, uncertain, complex and ambiguous world, which is VUCA. तो आपके साथ तो लाइफ में एक बहुत बड़ा VUCA हुआ है कि आपको इंटरनेशनल मार्केट से पाकिस्तानी मार्केट में how was the transition, by the way? Okay, it's a very interesting but at the same time unknown concept by the people. This is not something new. So in order to understand VUCA, पहले important ये है कि हम ये बात समझें VUCA exactly है क्या. So this was something which was developed back in a US war college. I guess if my memory serves correct, somewhere in the 1990s, by a general, and he was trying to come up with all the points जहाँ पे वो अपने जो soldiers हैं उनको बता रहे थे, because what we know that army, for that matter, किसी भी country के हो, it always tries and remains as professional as they can. तो एक concept वो लोग लेकर आए जिसमें उन्होंने ये चीज़ निकाली कि volatility, uncertainty, complexity, all these 3 things actually lead to an ambiguous situation. True. And for that matter, ऐसा नहीं है कि ये concept इस तरह का है जो नया हो हमारे लिए. Especially in this part of the world, I believe our people are very resilient, especially in the subcontinental region. As I've seen, not only in Pakistan, since I've worked in other parts of the world too, for this matter, India hai, Bangladesh hai, Sri Lanka hai, Philippines hai. These are all the countries जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा की नज़र आती है चीज़. तो इस concept को समझने के लिए और इसको अपने business processes के अंदर इसको embed करने के लिए important ये है कि हम इस चीज़ को समझें कि ये सारी चीज़ें ड्राइव कैसे हो रही हैं. और आई थिंक पाकिस्तान में आज से कोई 2 या 3 साल पहले, so I was in this seminar and all the panel members, we were looking at each other, what exactly is VUCA and what. But when we actually finally came through, तो हमें ये इस बात का अंदाज़ा हुआ कि this is something which we are leading our lives with. It's something जो daily हम उसको हम देख भी रहे हैं और हम समझ भी रहे हैं. तो
VUCA is something which is everywhere now. Professionally, in our careers, or even at personal levels. Talk about your friends or your relatives or, your friends or anywhere for that matter. It's everywhere. तो आपको क्या लगता है कि क्या जो हमारी एक बिजनेस ओनर्स हैं इस वक्त ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, क्या उनकी एक्सेप्टेंस है टुवर्ड्स दिस कॉन्सेप्ट, या वो कहते हैं कि जो एक बिजनेस ट्रेजेक्ट्री चल रही है इट्स गोना स्टे द वे इट इज़, और इसीलिए हम ये भी देखते हैं कि HR हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो, जैसे कोविड आया, लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रगल्ड अडॉप्टिंग टू दिस न्यू रियलिटी. तो जब HR एग्जिस्ट करता है, वो लोगों को भी ग्रो कर रहा है, हेल्प कर रहा है, नर्चर कर रहा है, टैलेंट को नर्चर कर रहा है, और अब HR बिजनेस पार्टनर का जो एक कॉन्सेप्ट है, लोग ही ऐसे लाए जाते हैं जो कि उस पर्टिकुलर जॉब के अकॉर्डिंगली होते हैं या उनको जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली होते हैं. तो आपको लगता है कि इफ़ इट्स पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, तो क्या बिजनेस ओनर्स, HR मैनेजर्स या HR डायरेक्टर्स और जो जनरल वर्कफोर्स है ऑर्गेनाइजेशन की, उनकी इतनी एक्सेप्टेंस और इतना एजाइल आउटलुक है कि वो इसके लिए जो स्किल सेट इमर्ज हो रहा है उसमें फ्रीक्वेंटली वो अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने आप को अपस्किल कर लेते हैं, रीस्किल कर लेते हैं? Okay, that's a very good question. Okay, let me try to put it in different examples so that we can understand this a little more. The concept of VUCA was actually to analyze different situations from different angles and try to propose solutions differently. Even now, hota kya, usually when we say that we learn from different people's experiences, from different organizations, practices. Now the situation is, जो पूरा environment है हमारा, ये इस तरह का हो गया जहाँ पर हमें हर एक situation को 10 different तरीक़ों से handle करना होता है. True. ठीक है. और इसीलिए वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है. अच्छा, जब ये वाली एक सिचुएशन आ जाती है तो इस सिचुएशन की वजह से हमें जो एक जो सबसे बड़ा एक जो चैलेंज हमें फेस करना पड़ रहा होता है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर हैं या इंस्टीट्यूशंस के जो लीडर्स हैं, उनको वो यही है कि their concept or the way they react to certain situations, that matters. So in this particular just to answer this particular question, I think leaders have to be more objective. ठीक है. और जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, जब कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमारा ग्राफ इट्स गोइंग साउथ, सो हम क्या कर रहे होते हैं, हम चीज़ों को इमोशनली डील करने लगते हैं, या हम चीज़ों को सब्जेक्टिव तरीके से डील करने लगते हैं. सही है. रादर देन दिस वी हैव टू डील विद दीज सिचुएशंस इन एन ऑब्जेक्टिव वे. हमने ऑब्जेक्टिफाई करना है चीज़ों को. और सिमिलरली जो हमारे साथ में जो हमारे लोग हैं, देन अगेन कम्स द पॉइंट, दिस कवर्स फॉर ऑल kinds of situations. मैं personally भी जब इस चीज़ को आगे लेकर चलता हूँ, और when we have tried to embed this at a personal level, तो हम वहाँ पे भी, हम even अपने जो रिश्ते हैं, हम वहाँ पे भी अक्सर चीज़ों को इमोशनल तरीक़ों से डील करने लगते हैं या सब्जेक्टिव तरीक़ों से डील करने लगते हैं. So we don't really have to do that. Sometimes we just only have to go in their shoes and we have to understand कि क्या सिचुएशन है, और इस सिचुएशन को डील करने के लिए क्या हम सब तैयार हैं. आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? वंस दैट इज डिराइव्ड, आई थिंक उसके आगे पे स्टेप्स आसान हो जाते हैं. HR का कितना रोल है टू मेक श्योर कि ऑल द पीपल आर ऑन द सेम पेज? आई थिंक अब HR का रोल पहले से बहुत ज़्यादा है. देयर वाज अ टाइम व्हेन HR only meant
that they have to take care of the clerical and the administrative processing of certain things. But now, just like you said, the concept of business partnering, it exists, and it matters more because पहली चीज़ ये है, if my own understanding is concerned, so the first thing is we have to understand the business and the needs of the business. Once we do, only then we can come up and we can be an integral part of the strategy division of any company or for any institution for that matter. So इसीलिए HR का जो role है, the first thing is they have to be very understanding as far as the concepts of the company or the processes are concerned. The second thing would be to help the leaders to bridge the gaps between the policies and the strategies of the company and the vision, so that everyone stands on the same page. So these are the two things. Okay, right? But I guess there is another side of the HR as well. These two are absolutely critical, that you are aware of the dynamics of the industry, the business acumen and everything. And then you're also, working on the alignment of the business strategies with the organizational vision. But I guess at the end of the day, organization is all about people. And HR, is supposed to be, a people's office or people enablement office, right? Who has to, connect with people, who have to make them collaborate, who have to, make them work along, each other towards a shared vision. So, Ismail, what do you think? अगर मैं आपको option दूँ to choose between two options, के HR the खड़ूस outlook or HR the empathetic outlook? Very nice. So, I'll just take this up in the context of Vuca. तो जब हम Vuca की बात करते हैं तो I think there are 6 major characteristics which we should talk about. And I really believe कि बहुत सारी organizations में ये चीज़ उस तरह से practice भी नहीं हो रही होती है. तो number 1, जैसे कि मैंने बताया, we have to be objective. 2, we have to be empathetic. Because if we're not, then we don't exactly know what people are going through. And if we don't know what they're going through, we would never be able to understand the change in their working characteristics, which eventually is affecting the organization's needs and the organization's objectives. Third, we have to remain confident. Because confidence is something which can drive us all the way around. 4, we have to set realistic targets. And when I say we have to set realistic targets, अक्सर हम देखते हैं companies में या even हमारी personal lives में भी हम ये सोच रहे होते हैं कि हम कोई बहुत बड़े तुर्रम खान हैं और हम किसी जगह पे जाके खड़े हो जाएंगे और वहाँ से जो है वो सारी चीज़ें सही होना शुरू हो जाएंगी. तो there's always a way. So we have to set realistic targets. Nothing is more demotivating than not be able to achieve those targets. So and target setting is something which is not only जैसे एक वक्त में ऐसे होता था कि बिजनेस प्लानिंग एक्टिविटीज़ होती थी और वहाँ पे सेट कर लिए जाते थे टारगेट्स कि जी हम कोई 50 बिलियन रुपीस की जो है हमारी सेल्स होंगी और हमारा इतना रेवेन्यू होगा. Target setting now has also changed, and this is in times of the VUCA world. हमें देखना है कि हम कैसे इन सब चीज़ों को लेकर चल रहे हैं. Sometimes it's difficult. तो वहाँ पे the 5th characteristic of a leader comes forward, and that is they have to be engaging. People have to know that their leader is standing with them, not with an ostrich approach. कि जी मैंने तो आपको बता दिया था, ये वाला काम हो जाना चाहिए था, आपने मुझे ये चीज़ नहीं बताई है. तो sometimes it's difficult for people to come forward and to adapt to that change or to accept
कि जी हमारी गलती है और हमसे ये नहीं हो सका. बट इफ़ द लीडर इज़ एक्चुअली स्टैंडिंग विद देम फॉर दैट मैटर, तो उनका वो पूरा परसेप्शन चेंज हो जाता है. फिर वो ये कहने लगते हैं, वो ये समझने लगते हैं कि द लीडर, द ऑर्गेनाइजेशन, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी और दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन इज स्टैंडिंग विद अस, जिसकी वजह से दे टेंड टू बी मोर प्रोडक्टिव. And once they're more productive, of course, it's a win-win situation for the organization and for the people, for everyone. And the sixth characteristic then comes forward, which is we have to be very integral. And when we talk about integrity, it has different definitions to it. So by integrity, I mean we have to be very transparent with our people. और यही चीज़ फिर वही मैं बात कहता हूँ कि यही चीज़ हमारी पर्सनल लाइफ्स में भी चीज़ मैटर करती है. We have to be open. We are all humans. We all make mistakes. No one is perfect. तो जब आप अपने साथ अपने लोगों को ये बात बताते हैं कि जी हमने एक कोई कॉन्सेप्ट हम लेकर आए थे, या हमने कोई एक्शन लिया था, या हमने कोई टास्क परफॉर्म किया और उसके रिजल्ट्स वर नॉट एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस. सो समवेयर एट सम पार्ट probably we did something wrong. You come up and you share that with the people, and at the same time you ask them for their fears, कि आप आएँ और आप हमें आकर बताएं कि कहाँ पे, and what scares you for that matter. तो उसमें क्या होता है, वो जो आपका एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और उसकी वजह से आप उस चीज़ को या उस प्रोसेस को या उस इंस्टीट्यूशन को आप बहुत बेहतर तरीके से आगे लेकर चल सकते हैं. तो these are basically the 6 characteristics which we all I believe we should take this into consideration, because then again comes the point, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ उसी एक्सपीरियंस से रिजॉल्व हो सकती है जो पहले हमने किया हो. जैसे लेट्स सपोज this cup of coffee and I pick this up, at some point of time, since I'm sitting in this way, कहीं हो सकता है कि मेरा पैर इस स्टूल के ऊपर लग जाए and the cup of coffee may fall off. तो शायद मैं इस चीज़ को बेहतर करने के लिए यही चीज़ किसी और तरीके से कर सकूँ. Probably the same thing when you will perform, it will be in a different manner. ठीक है, तो हर पर्सपेक्टिव को अलग तरीके से एनालाइज करना और हर चीज़ का एक जवाब ना होना, इसकी पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, और हमारा काम एज लीडर्स वो है भी है कि हम उस चीज़ को उसी तरह से आगे लेकर चलें और उसको देखें. Very nice. I guess you have come up with very, critical 6, aspects which you shared. And इसमें से मेरे दिमाग में बहुत सारे questions आ रहे हैं, but that we will keep for the second episode. But if I have to sum it up nicely, what you have said, it is actually, कि जो हमारा emerging scenario है, इसके अंदर, as you said that, you have to, enable people, you have to have confidence on them, you have to, analyze things from a different angle. So, culture is something, जिसके अंदर ये सारे aspects एक enabling environment की form में अगर आप, provide कर रहे हो अपने लोगों को, तो nobody can stop them from, nurturing and growing. But the thing is, if the HR fraternity is talking about all of these things, that these are the integral aspects to, grow and to be sustainable in the future, then why still organizations are, failing, why they are struggling, to maintain that, trajectory, and why they were struggling to cope up with the, disruption like COVID-19. So, मेरे ख्याल से तो HR fraternity पे ये भी बहुत बड़ा as HR business partners या director HR एक बहुत बड़ी responsibility है कि वो अपने जो owner of the organizations हैं,
उनको भी ट्रेन करें, उनको भी कोच करें, उनको भी मेंटोर करें कि how they are supposed to keep reinventing, reimagining and rebooting their business definition, and also create and invest in people development कि वो उतने quickly जो है या उतने rapidly जो है उस environment को adopt कर सकें और उसमें sustainable रह सकें. So I guess this is a question which we really need to throw कि HR जो है, is it supposed to just train the people working in different divisions, or also to include some programs for the mentoring and coaching of the chief executive officers and C-suite executives, और किस तरह से फिर वो एक पूरी symphony create करते हैं within the culture कि वो business trajectory जो है उसको sustain कर सकें. So that's the question. Thank you so much, Farrukh, for coming. And I guess vision, understanding, and agility, are something which will really help us along with these 6 characteristics which Farrukh just briefed today to stay relevant in the emerging future. And now we will move to the apex of our show, Mr. Khalid Naki, who will sum up this conversation in the form of a bouquet of wisdom. Over to Khalid Naki, sir. I think it was an excellent session, and a lot of deep insights were, unearthed during this session, and thought and views of a man from the industry is also there. And game है Vuca, and Vuca की description भी आपने सुन ली. Basically Vuca किसी shape और form में हमारी life में आता रहता है. हमारा challenge ये है कि उसको किस तरह हमने अपने shock absorbers बनाने हैं कि it can absorb any shock which may come up, because अभी the emerging world जिसकी बात हो रही है उसमें the rate of change of the external rate of change is very fast, and internal rate of change is failing to catch up with it, because of which a lot of organizations are going through a lot of stresses and pain points, and they are finding it difficult to fight it out, resulting in demoralization and discouragement of people working for that organization, क्योंकि organizations भी उतना ownership नहीं ले पा रही in majority of industries. So empathy का बहुत जिक्र रहा, लेकिन empathy is also monetary driven. अगर if company is not making money, और empathy के लिए labor की तो expectations या employees की यही होती है कि inflation is going up, we should be taken good care of. On the other hand, companies not making money. So how to resolve this dilemma and to how to come out with the possible solutions, how to create that matrix कि जिसकी basis के ऊपर you can maintain the happiness, you can maintain the empathy while your business is struggling, what steps to take, how to take this business out of crisis, or how to avoid potential crises which may come up tomorrow. Today they are not visible. So for all this, I would suggest that idea trainings is there to help you in preparation of your VUCA report, along with the remedies and training of the minds, because at the end of the day, the training of minds matters in managing any difficult situation, because इंसानों ने ही face करना होता है और उनकी तैयारी के लिए क्या करना है right from top to bottom. तो I think it was a great session, and let's see कि next हम कहाँ पे जाते हैं और how to manage VUCA, क्योंकि पाकिस्तान is facing a lot of VUCA scenarios. COVID आया, अभी सलाब आ गया, कल कुछ और हो जाएगा. तो but we have to stay resilient. Our nation is a strong nation. We have a grit, and we can do it all. But somebody has to coach us out of this dilemma, और mindsets वो बनाने हैं कि हमें VUCA में भी smooth sailing हम कर लें और sweet transition कर लें. So thank you very much.